हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथ्स 2025 बोर्ड पेपर का एक इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बोर्ड्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो देखने में सिंपल लगते हैं और अगर आप कंसेप्ट समझ लो तो लिटरली 10 सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ सॉल्यूशन देना नहीं है, बल्कि आपको एग्जाम स्टाइल थिंकिंग डेवलप करवाना है। कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें, कौन सा कंसेप्ट लगाना है और कैसे बिना एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखे परफेक्ट आंसर लिखना है, ये सब हम यहाँ सीखेंगे। और हाँ, मैट्रिक्स चैप्टर हमेशा से CBSE का फेवरेट स्कोरिंग टॉपिक है, स्पेशली इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए अब देखते हैं बोर्ड पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन क्या था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने बोर्ड पेपर के एक्चुअल क्वेश्चन पर। ऑन योर स्क्रीन you can see the question. If A is equal to is a 3 by 3 matrix with first row -1, 0, 0, second row 0, 1, 0, and third row 0, 0, 1. Then A inverse is? नीचे 4 options दिए गए हैं A, B, C, D. इस क्वेश्चन का मेन फोकस ये समझना है कि दी गई मैट्रिक्स किस टाइप की है और उस टाइप की मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। Exactly. This is a diagonal matrix. इस चैप्टर में एक क्विक ट्रिक हमेशा याद रखो, अगर मैट्रिक्स डायगोनल हो तो उसका इन्वर्स सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल से बन जाता है। ये ट्रिक आपका बहुत टाइम बचाती है और एग्जाम में शॉर्ट मार्क्स दिलवा देती है। Before solving the question, let's quickly understand the core concepts and the variables used. First, A is the matrix given in the question and a -1 means the inverse of A. The inverse is a matrix that satisfies the condition A times A inverse is equal to I, where I is the identity matrix, the one with ones on the diagonal and zeros everywhere else. Now, a diagonal matrix is a matrix where only the diagonal elements are non-zero. This makes operations like finding the inverse extremely easy. Now, a key technique here is, for any diagonal matrix with non-zero diagonal elements, the inverse is also diagonal. How do we find it? Very simple. Take the reciprocal of each diagonal value. For example, 2 becomes a half and 1 stays 1. Finally, to verify your answer, multiply A and A superscript 1. If the result is the identity matrix, your inverse is correct. That's the entire concept in a nutshell. Now let's solve this question step by step. Step 1. Identify A as a diagonal matrix. First, we look at the given matrix A. A equals to first row -1, 0, 0, second row 0, 1, 0, and third row 0, 0, 1. Observe carefully, all the elements outside the main diagonal are 0. Only the diagonal entries, that is the top left, middle, and bottom right positions, have non-zero values -1, 1, and 1. Because only the diagonal has non-zero values and the rest are 0, we say that A is a diagonal matrix. ये पहला important observation है. Now let's apply this rule. The diagonal elements of A are -1, 1, 1. Let's take their reciprocals. Reciprocal of -1 is -1, reciprocal of 1 is 1, reciprocal of 1 is 1. So the inverse matrix A inverse becomes row 1, -1, 0, 0, row 2, 0, 1, 0, row 3, 0, 0, 1. Now, let's verify that our inverse is correct by multiplying matrix A with A inverse. We are asked to calculate A times A inverse as follows. A times A inverse equals row 1, -1, 0, 0, row 2, 0, 1, 0, row 3, 0, 0, 1 multiplied by row 1, -1, 0, 0, row 2, 0, 1, 0, row 3, 0, 0, 1. When we multiply each row of the first matrix with each column of the second matrix, we get row 1 times column 1 -1 times -1 is equal to 1 plus 0 equals 1. Row 1 times column 2 -1 times 0 is equal to 0 plus 0 equals 0. Row 1 times column 3 -1 times 0 is equal to 0 plus 0 equals 0. Row 2 times column 1, 0 times -1 is equal to 0 plus 1 plus 0
equals 1 row to times column 2. 0 times 0 is equal to 0 plus 1 plus 0 equals 1 row to times column 3. 0 times 0 is equal to 0 plus 0 plus 1 equals 1 row 3 times column 1. 0 times minus 1 is equal to 0 plus 0 plus 0 equals 0. Row 3 times column 2. 0 times 0 is equal to 0 plus 0 plus 0 equals 0. Row 3 times column 3. 0 times 0 is equal to 0 plus 0 plus 1 equals 1. The result of multiplying matrix A and the inverse of matrix A is identity matrix. The identity matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 equals I. Thus, we have successfully verified that A times the inverse of matrix A is equal to I, which proves the inverse is correct. Hence matches option D. Thus, we have successfully verified that A times A inverse is equal to I, proving the inverse is correct. Remember, a quick trick for finding the inverse of any diagonal matrix is just take the reciprocal of each diagonal element and you're done. Stay tuned to this page for more cool tricks and solutions. Keep practicing and mastering your maths. Happy learning, everyone!